Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all the viewers. Today we will discuss about how to take a history of congenital anomalies from any obstetric patient. So first of all, always important is the biodata, in which most significantly in this history includes the consanguineous marriage, age of the mother to rule out any chromosomal abnormalities, and the blood group, if negative, inquire about the husband's blood group. So the patient can come to you with any of the following presenting complaints. It can be either anomalous baby on the scan report shown by the doctor or radiologist, a doctor told about anomaly and to get admitted for the termination of pregnancy, intrauterine death or stillbirth, any aberrant lical volume admitted for fetal-maternal monitoring or termination of pregnancy, or any decrease or absent fetal movements. So, in the history of the presenting illness, inquire about when the anomaly was diagnosed, whether in the very first scan, it can be either a dating scan, an anomaly scan, any other growth scan. So how it was diagnosed, whether it was told by a doctor due to any significant maternal history or a scan report. So always take the trimester-wise history to rule out the cause and the type of anomaly. In the first trimester, inquire about whether the pregnancy was planned or unplanned, the type of conception, spontaneous or artificial, because IVF and artificial reproductive techniques are also associated with any congenital anomaly and eventually fetal loss. In the dating scan, inquired about whether it was twins or not, whether she has taken the folic acid to rule out neural tube defects, any history of fever, flu, rash, or pets at home, more specifically cats, to rule out torch infection, and a history of chickenpox in the first or any subsequent trimesters. Then inquire about any history of drug intake, which most specifically causing the congenital anomalies, which are ACE inhibitors for hypertension, for any renal problem, isoretinoids for any other skin problem, dermatological problem, alcohol intake, and antipsychotics, lithium, or any mood, bipolar disorders, medication, any multivitamin excess, and history of warfarin intake or anti-epileptics, etc. So if the patient is non-diabetes with increased value of HbA1c, so inquire about you can have the congenital anomalies or congenital malformations with the diabetes as well. Inquire about the radiation exposure. How to inquire about it? You can ask any factory near the residence, any nuclear plants near the residence, or any X-ray exposure or any radiological worker. So in the second trimester, inquire about any anomaly scan done or not. What were the findings? If any anomaly was present, have the doctor told you or have you discussed with the pediatrician that this anomaly is compatible with life? Any aberrant lichal volume, which can be either in the form of poly or oligohydramnios, or any fetus body swelling, which can be hydrops. So any invasive testing done, which can be CVS, amniocentesis, or cell-free fetal DNA, fetal echo done for any cardiac anomalies or not. In the third trimester, inquire about any Doppler or any subsequent scans done or not, and what were their findings. Whether the fetal movements are satisfactory to the mother or not. So this is how you take the history of presenting illness. Then inquire about the obstetrical history and rule out any previous congenital anomalies history, any previous history of down baby, intrauterine death, any previous history of miscarriages. If the patient is Rh negative, any history of anti-D injection. In the past history, inquire about the comorbidities of the patient, which can be either diabetes, any cardiac anomalies, any heart blocks, any epilepsy. In the drug history already mentioned. In the family history, inquire about congenital anomalies and history of Down syndrome that in the family,
any history of cardiac diseases, any heart block, any anti-rolla syndrome that runs in the family. In the personal history, inquire about alcohol intake. So this is how you inquire about the history of congenital anomalies. So let's discuss it in the Urdu language, how you can ask from the patient. मोस्ट सिग्निफिकेंटली इन द बार डाटा आपने पेशेंट से पूछना है कि आपकी खानदान में शादी हुई थी, उम्र कितनी है आपकी, क्योंकि maternal एज इज responsible for the chromosomal abnormalities. With increasing age, the percentage of chromosomal abnormalities increase. एंड आपका ब्लड ग्रुप क्या है, अगर नेगेटिव है तो आपके खावन का ब्लड ग्रुप क्या है। पेशेंट आपके पास आ सकती है कि मुझे अल्ट्रासाउंड पे डॉक्टर ने बच्चा abnormal बताया है, या डॉक्टर ने कहा है कि आपका अल्ट्रासाउंड ठीक नहीं है, आप अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए, या मैं दाखिल हुई हूँ हमल खत्म करने के लिए क्योंकि मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, या बच्चा पेट में फौत हो चुका है, या बच्चे का पानी बहुत कम या बहुत ज्यादा है, या बच्चे की मुझे हरकत ठीक महसूस नहीं हो रही। और जब स्कैन करवाया तो एनॉर्मलस या एबनॉर्मल बच्चा था। फिर आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में पूछना है कि आपको कैसे पता चला कि ये बच्चा जो है वो एबनॉर्मल है, किस महीने में आपने कौन से अल्ट्रासाउंड पे पता चला था, क्या सबसे पहले वाले अल्ट्रासाउंड पे, या जो दूसरे बल्कि चौथे पांचवें महीने में बच्चे के पैदाइशी निकाइस चेक कराने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें पता चला था। और फिर डॉक्टर ने क्या कहा था उसके बारे में। उसके बाद आपने पूछना है क्या प्रेगनेंसी खुद ही हो गई थी या प्लान थी, अनप्लान थी, कैसे हुई थी, जब आपने सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था तो क्या उसके ऊपर जुड़वा बच्चे बताए थे, आपने हमल के शुरू के 3 महीनों में ताकत की दवाइयाँ या जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं वो इस्तेमाल की थी, और हमल के शुरू में आपको बुखार, नजला, जुकाम, जिस्म पे धब्बे बनने का कोई मसला तो नहीं रहा था। फिर आपने पूछा कि क्या आप हमल के शुरू में या हमल से पहले कोई अद्वियात इस्तेमाल करती थी, कोई ब्लड प्रेशर के लिए या गुर्दों के लिए विच इज एस इनहिबिटर, कोई जिल्द की मसलों के लिए आइसोट्राइटोनाइन, अल्कोहल शराब नोशी, कोई एंटीसाइकोटिक्स नफ्सियात की कोई अद्वियात, लिथियम, मल्टीविटामिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, विटामिन ए एक्स, वार्फरिन कोई दिल के मसले के लिए, या कोई और किसी भी किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करती हूँ वार्फरिन, या कोई मिर्गी के मसले के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करती हूँ एंटी एपिलेप्टिक्स। हमल के शुरू में क्या आपको शुगर थी, क्या आपने शुगर चेक चेक करवाई थी, शुगर कंट्रोल थी, बहुत ज्यादा शुगर तो नहीं थी, कंजाइटल malformations ड्यू टू डायबिटीज, क्या आपके घर के पास कोई फैक्ट्री तो नहीं है या कोई न्यूक्लियर प्लांट, या आपका बहुत ज्यादा एक्सरे से वास्ता पड़ता हो, या फिर आप वहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हो। उसके बाद एनॉमली स्कैन बच्चे के पैदाइशी निकाइस चेक करवाने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया था आपने। उसके बाद डॉक्टर ने क्या बताया था, क्या मसला है, क्या जो मसला बताया था, क्या आपने बच्चे के माहिरीन डॉक्टर से रब्ता किया था, उन्होंने क्या कहा था कि क्या ये पैदा होने के बाद बच्चा बच सकेगा कि नहीं, बच्चे का गेट पानी बहुत ज्यादा या बहुत कम तो नहीं है, बच्चे का पेट में या फिर जिसम के किसी और हिस्से में पानी या सोजिश तो नहीं बहुत ज्यादा, सोजन तो नहीं बहुत ज्यादा हो गई, क्या आपने कोई सुई वाला टेस्ट करवाया था बच्चे के पेट के पानी एमनियोसेंटेसिस के लिए या फिर अव्वल के टुकड़े सीरियस के लिए, या आप अपने अपना कोई टेस्ट करवाया और बहुत महंगा जिसमें बच्चे के सेल्स या फुलियात हमें मिलते हो सेल्फ रिपीटेड डीएनए। उसके बाद अगर एब्नॉर्मल स्कैन के ऊपर एब्नॉर्मल बच्चा आया था, कोई दिल का मसला था, तो क्या बच्चे के दिल का अल्ट्रासाउंड करवाया था जिसे फीटल एको। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने क्या बाकायदगी से अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, या कोई रंगीन अल्ट्रासाउंड करवाया है, उसमें कोई मसला तो नहीं आया किसी किस्म का, बच्चे की खून की सप्लाई ठीक जा रही है, कि आपको बच्चे की मूवमेंट ठीक महसूस होती है। देन इन द ऑप्स हिस्ट्री का पहले किसी बच्चे के दफा मसला हुआ है ऐसा, पहले कभी कोई डाउन का मसला हो बच्चे का, पहले बच्चा फौत हो गया हो, आपका हमल जाया हो गया हो, क्या आपने जब पिछले बच्चों की पैदाइश की दफा महंगे टीके लगवाए थे कूल्हे पे, तो आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था। उसके बाद पास हिस्ट्री में कि आपको कोई शुगर का मसला, दिल का मसला, मिर्गी का मसला जिसके लिए आप अद्वियात लेती हो तो बताइए। आपके खानदान में एबनॉर्मल बच्चे या कोई मुंह की बीमारी या डाउन सिंड्रोम की बीमारी या कोई दिल की बीमारी तो नहीं है। माजरत के साथ दाते नोयत का सवाल पूछूंगी, शराब या कोई और किसी किस्म का नशा व चीज इस्तेमाल तो नहीं करती हैं।
So this is how you inquire about the history of congenital anomalies from the obstetric patient, and I hope it is very easy for you people now. Do subscribe the channel for more updates and more history templates. Thank you and good luck.